8 workers are still trapped in an under-construction tunnel in Telangana after it collapsed on Saturday morning. Now, the incident happened at around 8:30 a.m. on Saturday when a portion of the Srisailam left bank canal tunnel collapsed in Telangana's Nagarkurnool district. While the rescue operations to bring out the 8 trapped workers are on, the teams have said that it is difficult to reach the spot due to mud. The rescue teams, which tried to go inside the collapsed portion of the tunnel, while inspecting the site, had to come back because they could not go further in. One of the rescue personnel of the State Disaster Response Force told that there is no chance to go to the spot inside the tunnel. It has completely collapsed and mud is reaching up to the knees. We will have to take another step. The Indian Army also joined the rescue operations at the collapse site. Its engineer task force was deployed to assist with the rescue operations. The Indian Army's engineer regiment came along with an excavator, dozer and was put on standby to help with the rescue operations. Meanwhile, Telangana Chief Minister Revanth Reddy spoke to Prime Minister Narendra Modi about the incident and detailed the state government's ongoing rescue efforts of the trapped workers. Prime Minister Modi has assured him that the centre will assist with any necessary help. On Saturday night, Revanth Reddy also reviewed and inquired the state ministers about the ongoing situation at the SLBC tunnel collapse site. रात को लगभग 10 बजे हम लोग गए थे अंदर एक बार पता करने के लिए और सिचुएशन क्या है अंदर उसको देखने के लिए। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल इस जो गेट है, इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए। मगर कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाएं। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। Let's go across to my colleague Noor Mohammed, who joins us live from, in fact, the tunnel site there. Noor, a very good morning to you. बताइए अभी रेस्क्यू एफर्ट्स की लेटेस्ट जानकारी क्या दे सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? कितना समय है जो अथॉरिटीज बोल रही हैं कि लगेगा इनको रेस्क्यू करने में? करने के बाद जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तरह की दिक्कतें पेश चाहिए कि जगह तक जाने के बाद लगभग शायद दिक्कतें खत्म हो जाएगी। देखिए, कल से लेकर लगातार अधिकारियों को देने के लिए किलोमीटर के बाद ये घटना जो हुई है, ये सिचुएशन अंदर इंतहाई बैड है। देखिए, जिस तरह से पानी की निकासी का अधिकारी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है, उसी तरफ मिट्टी भी ऊपर से गिरते जा रही है। ये जो सीमेंट के जो शीट्स बनाए गए थे, देखिए टनल के अंदर इस तरह से होल करने के बाद ये जो शीट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये शीट से ही पूरी तरह
टनल को ढाका जाता है। टनल का जो राउंड जो सिचुएशन होता है ये सीटों से ही बनाया जाता है। 14 किलोमीटर के बाद जब खुदाई चल रही थी, जब शीट को रखा गया था, अचानक ऊपर से एक साथ तेजी के साथ मिट्टी और पानी के आ जाने की वजह से घटना पेश आई है। लेकिन अधिकारी इस घटना के बाद जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ के स्पॉट तक जाकर उन्होंने लोगों का नाम भी पुकारा है। अंदर से अभी तक कोई आवाज नहीं आई है। उस वक्त कल से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, अभी तक अधिकारियों को कोई राहत की सांस नहीं मिली है। हर तरह की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो अंदर जो लेबर फंसे हुए हैं उनको पूरी तरह सुरक्षित निकाला जाए। दूसरी तरफ देख सकते हैं, आर्मी अपना पूरा मेडिकल कैंप लगाया बैठा हुआ है कि आर्मी और जितने भी अधिकारी है पूरी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनको हम लोग राहत की तरह से पूरी तरह उनको बाकायदा निकाल लेंगे। अभी देखिए यह तरफ आर्मी अपना मेडिकल कैंप लगा रही है, दूसरी तरफ लोगों वैन के लिए जिस तरह के अधिकारी यहाँ पे पूरी तरह इंतजाम कर रहे हैं कि अंदर भेजा जाए, किसी भी तरह से उनको निकाला जाए। मगर दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी पीएम से बात की थी। पीएमओ भी पूरी तरह इस घटना पर लगातार नजर बनाए रखी थी। पल पल की जानकारी पीएमओ ले रही है। और दूसरी तरफ राज्य सरकार के अधिकारी जितने भी थे इस टनल के पास पहुंच चुके हैं। आप देखिए इस टनल का जो सिचुएशन देखे तो आप किस तरह की घटना हो सकती है आपको अंदाजा हो सकता है। पूरे अधिकारी एक तरफ केंद्र सरकार अपनी नजर बनाए रखी है, दूसरी तरफ राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी है इस टनल तक पहुंच चुके हैं। तो अभी अधिकारी पूरी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर जिस तरह से अंदर जो पानी और कीचड़ का जो बहाव है वो काफी दिक्कतें पैदा कर रहा है। हो सकता है कि अब जिस तरह के इंजीनियर देश भर से बुलाए गए हैं उनसे अब कोई राहत की सांस और कोई सही नतीजा निकल पाएगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। पूरी तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह रखी है और पल पल की जानकारी ले रही है उनसे। अभी तक का बचाव कार्य में कितनी प्रगति हुई है? क्या किसी तरीके का कोई नया तरीका अपनाया जा रहा है इन वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए? देखिए यहाँ देश भर के जितने भी जो आला दर्जे के अधिकारी थे या आला दर्जे के जो टेक्निकल इंजीनियर थे उन तमाम को इस घटना यहाँ पे बुलाया गया है। इस तरफ देखिए इस घटना के बाद आर्मी अपने मेडिकल कैंप लगा रही है कि यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरी तरह हम उनको राहत बिल्कुल सही सलामत बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ पूरी तरह जो सिचुएशन जो देख रहे हैं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी है वो तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मगर जिस घटना होने के बाद जहाँ पे सिचुएशन हुआ है, घटना हुई है, वहां पर जाने के बाद उनके नाम लेकर पुकारा गया है मगर वहां से कोई आवाज बाहर नहीं आती। उसके बाद सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। देखिए अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जिस तरह का कीचड़ और पानी का जो बहाव है जो ऊपर से लगातार 14 किलोमीटर के बाद जो 14 किलोमीटर अंदर जाने के बाद जिस तरह से पानी और कीचड़ का बहाव जो आते जा रहा है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने पेश आ रही है। मगर सबसे पहले कल से लगातार पानी दूसरे लगातार पानी बाहर निकला जा रहा है मगर कीचड़ वो इंतहाई खराब है। अब ये अधिकारी बड़े जनरेटर जो है वो अंदर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन है वो इंतहाई तेजी के साथ अंदर भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह की घटना होने के बाद ऑक्सीजन की किल्लत आती है, वो ऑक्सीजन की कहीं किल्लत ना हो इस तरह के इंतजाम अधिकारी ने किया है। मगर फिर वक्त जिस तरह से कल से लेकर अभी तक जो ऑपरेशन किया है इससे अभी तक अधिकारियों को कोई राहत की सांस नहीं मिली है। अब जिस तरह की जो तेजी बढ़ाई जा रही है उससे लगता है कि शायद हो सकता है कि कुछ देर के बाद कोई सही नतीजा और कोई खुशखबरी अंदर से शायद आ सकती है। Right. धन्यवाद आपका नूर हमारे साथ जुड़ने के लिए. We'll keep coming back to you throughout the day. Let me also quickly go across to Major General TPS Rawat, mine and tunnel expert and former Chief Engineer BRO. A very warm welcome to you, General. You know, I directly go into the nitty-gritty of it and, you know, ask you that given your experience, what are the major challenges in rescuing workers trapped inside the tunnel? You see, good morning. Basically, firstly, I want to, have my condolence, whatever my sympathy with the people who are trapped inside. We had discussed this during Silkara also. Absolutely. And I think we have not learned from our mistakes. What I was reading today somewhere was that this was a 20-year-old project which has just started work again about 4 days back, and some water channel has broken out, and due to which the water has started coming in and the tunnel has collapsed. Last time also I had spoken about something known as a feasibility study, which is done prior to deciding where the tunnel has to be constructed and how it is to be constructed. This feasibility study is a very important thing. We discussed last time, but I don't know whether it's being implemented. A lot of people take it lightly, in the sense, because it is just a feasibility study, some of the executives and the people who are there
planning the tunnel, they think it is just a routine procedure which you can, do away with it and let the contractor, main contractor, when he comes, he will do it on his own. But let me tell you, this is the feasibility study on which you decide whether the terrain and the area where you're constructing the tunnel is correct or not, or does it have any fault lines, which I have all last time also told you that you have to bore, right from the top of the tunnel to the bottom where the tunnel is to be constructed, and you take out those rock cores to determine the overburden. And if you have that, I don't think in this age when we are creating such marvels in engineering and all, this is a very simple thing where once you get the overburden and the type of rock and the issues inside that rock, where there may be streamlets flowing, small water bodies there, you can easily design the tunnel and there should not be a problem. But because we take shortcuts, we do not do our work properly, that is why such things happen. Now coming to this tunnel, like I told you earlier also that this was an old tunnel which I have read somewhere, and just about 4 days back or a week back, construction has started. And there are, one of the reason for such disasters is, lining track expansion, which would have existed or would have developed over the time. So we should, I think, in all propriety, we should have done a kind of a, you can say check or a little chota feasibility study to ensure that the tunnel was safe to proceed ahead. So those are my thoughts, All right. initially. Right, General, also do tell us, how challenging is the rescue operations in a tunnel collapse scenario? What are the sort of key technical difficulties involved in such missions? The technicality is, you see, in this, they say there's a 200 meter of the entire overburden which has come down and blocked the tunnel at a distance of around 13.5 or 14 kilometers inside the tunnel. Now, you see, when the overburden comes down, the entire area on top of that overburden is also weak. So it has collapsed and come down. So when you are trying to excavate also, or you are going to take out the mud also, first of all, there is, in this case, about a 14-kilometer distance where you have to transport that entire thing outside the tunnel in your rails or whatever you have, you have small railway wagons kind of things in which you go inside. So that's the entire thing, nothing bigger than that tunnel bore you can put inside and get the mud out. So it's a very Herculean task to get entire thing, and the time taken to get it out to 14 kilometers, and then the thing is loose. It might have much more mud coming down. Then there is water also, in fact, coming in. I have been told. So it would have made everything very loose. So as far as I see it, it's a very, very difficult task, and I only hope and pray for those people that they come out safely. Right, let me finally ask you this, General, how frequently should tunnels undergo, under construction, tunnels which are under construction undergo structural audits to prevent such disasters? You see, structural audit in this case should have been done because it's being revived after a long period. And as it is, not only in structures, but in buildings also, there should be a routine kind of structural audit be done to ensure that things are safe for people to work. What happens actually is, the system of L1 tendering, which is there with us, that should be done away with. We should have experts in such fields who are, renowned, who give you reports which are, authenticated and stamped by the technical institution like IITs and all, after a proper design has been made. And then only such people who are capable, they should be allowed to enter this field. I have seen in my own career, and still I am seeing now working from outside, this L1, there are a lot of people who are floating around, they fill in tenders, take the contracts, then they're unable to do it. And then finally, when you force them to do it, they just give you some kind of a report. And so all these things should be, I am sorry that I'm trying to bring out all these things, but that's a fact, You have to be very, very careful and ensure that technically you are very correct and you are ensuring the best of equipment and the best of technology to make such tunnels. Because you can't, besides losing the lives also,
the strategic importance or the other importance, the tunnel is great. It is helping so many lives, so much of time, resources, and money will be saved in case when this tunnel is made. But then if we take it lightly and we do such, kind of work, so it is going to be a national disaster besides losing Right. such precious lives. Right. Thank you very much, General, for joining us with all of those important insights.